fourth poem. Bratuka Vachu Gaka Bahu Bandhanamulaina. That means if you are surrounded with a lot of problems, in that situation also you can survive. Vachu Gaka, Lemi Vachu Gaka. May your wealth, may you lose your wealth or you become a poor. Jiva Dhanamulaina. Jedugaka Padugaka. That means your life is surrounded completely with the situation that is having all the troubles. That means your life is in difficult situation. Mata Dirugaleru. So in that situation also you may lose your wealth, you may become poor, and everywhere you find difficulties. In that situation also, when you speak truth, you should not change your words. You should not lie. You should say truth. Mana dhanulu. That is the real wealth. So the meaning of this poem is, if you are in a difficult situation, you may be surrounded with troubles, you may be lose your wealth, and the whole life is completely in difficulty, but in that situation also the real wealth of the person is his truthfulness, the promises he keeps. Let us learn bhavam. So bhavam, aneka kashtalu chuttumuttavachu. Lot of problems will surrounded you. Sampadalanni poi pedarikam ravachu. You may lose all your wealth. Sampadalanni means wealth. So you may lose your all wealth. Pedarikam ravachu. You will become poor. Pedarikam means poverty. Dhanam nashtamai jivitam kashtala palu kavachu. So your wealth will be destroyed and your life is surrounded with the difficulties, problems. Aina sare. If this all happens also, manadhanulu. Manadhanulu means the real property or the real treasure of a person is matanu matram tapparu. That he will not change his words, that he will keep his promises, that he will say truth in these situations. Let us learn this in Hindi. ब्रतुका वच्चु गाका बहु बंधनमुलैना. अगर हमें मुश्किलात देखना पड़े तो भी हम सारे मुश्किलात को फेस करते हुए जिंदगी गुजार सकते हैं. वच्चु गाका लेमी वच्चु गाका. अगर हमारी दौलत या जायदाद हमसे छीन ली जाए या बर्बाद हो जाए, हम गरीब हो जाएं, जीव धनमुलैना जेड़ुगा का पड़ुगा का, और हमारी जिंदगी मुश्किलात से घिर जाए, माटा दिरुगलेरू, तो उस हालत में भी हम हमारी ज़बान से नहीं फिरना चाहिए. हम जो सच बोल रहे हैं तो हमें सच बोलना चाहिए. मान धनुलू, तो अगर हम हमारा वादा पूरा करते हैं तो वही हमारी सच्ची दौलत होगी. अब देखते हैं हम भावम. सो भावम, अनेका कष्टालु चुट्टू मुट्टावच्चू. सो अनेका कष्टालु मीन्स कई मुश्किलात हमारे आसपास आ सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं. संपदलन्नी पोई पेदरिकम रावच्चू, हमारी सारी दौलत हमसे हमारे पास से जाकर गरीबी आ सकती है. धनम नष्टमय जीवितम कष्टाल पालू कावच्चू, हमारी जो दौलत है वो बर्बाद होकर, डिस्ट्रॉय होकर, हमारी जो जिंदगी है वो मुश्किलों में आ सकती है. आ भी जाए, आईना सरे, अगर आ भी जाए. मान धनुलू माटनु मातरम तप्परू, सारे मुश्किलात होने के बावजूद भी जो इंसान है, इंसान की जो असली दौलत है, मान धनुलू, असली दौलत क्या है उसकी ज़बान है. तो वो ज़बान पे अपने कायम होना चाहिए. माटनु मातरम तप्परू, तो वो अपना वादे से मुकरना नहीं चाहिए.